Hello everyone. So now we are going to proceed for the topic finishing in concrete. So basically अभी तक हमने आपका कंक्रीट प्लेसिंग कैसे कैसे फ्रेश प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट के बारे में पढ़ा कि फ्रेश कंक्रीट बनाते कैसे हैं, उसके बाद उसको प्लेस कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं एंड ऑल। एंड उसके बाद हमने जो मेन फिनोमेना पढ़ा जो कि कंक्रीट की प्रॉपरली स्ट्रेंथ गेन करने के लिए होता है, दैट इज द क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू study the topic finishing of concrete. So basically this is the final arrangement is performed for achieving the clean or the smooth surface of the concrete. So basically finishing operation is the last operation in making concrete. Finishing is the real sense does not apply a concrete operations for a beam concreting. Finishing may not be applicable. Whereas for the concrete road payments, airfield payments or the other flooring or domestic building, careful finishing is of great importance. Concrete is often dubbed as a drab material, incapable of offering pleasant architectural appearance and finish. This shortcoming of concrete is being rectified, and concrete these days are made to exhibit pleasant surface finishes. Particularly, many types of prefabricated concrete panels used as floor slabs or wall unit are made in such a way to give very attractive architectural effect. When concrete cladding are made to give attractive look. So basically it is clear that in the if we are talking about the beams and columns, then so basically कोई finishing की जरूरत नहीं पड़ती, but in the case of road pavements, airfields or the for the domestic use or the residential buildings, mainly flooring or the finishing of the concrete plays an important role. So basically surface finishes may be grouped as under formwork finishes, surface treatment and applied finishes. So basically जो भी आपका कंक्रीट का सरफेस है उसको फिनिशिंग के लिए यहाँ पे उसको कैटेगराइज किया गया तीन पार्ट में. फर्स्ट वन इज फॉर्म वर्क फिनिशर्स, सेकंड वन इज सरफेस ट्रीटमेंट एंड द लास्ट वन इज applied finishes. So if we are talking about the first one, which is formwork finishes, so basically concrete obeys the shape of formwork. For example, centering work by judicially assembling the formwork either in plane surface or in undulated fashion or having the joints in a particular V-shaped manner to get regular pins or grooves. A pleasing surface finish can be given to concrete. So basically a prefabricated wall unit cast between steel framework having very smooth surface using right proportioning of materials can give such a nice surface which can never be obtained by the best masons. Similarly, the prefabricated floor units can have such a fine finish at a ceiling which cannot be obtained by the best masons with the best effort. These days, with the cost of labor going up, potentially natural directly to the self finishing of the concrete surface. So basically जो भी हमारा फॉर्म वर्क होता है अगर आप उसमें एक प्रॉपरली मिक्स्ड कंक्रीट अगर आप उसमें पावर कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपका जो सरफेस होगा वो स्मूथ सरफेस परफॉर्म करेगा. So basically these are the mechanical trowels for finishing factory floors. Sometimes surface hardener is sprinkled and finished. So basically these are the machines which are the mechanical trowels which are used to provide a clean or clear surface of the concrete. So basically this is the pump and this is rotating clockwise or anti-clockwise for providing a smooth surface for the finishing of the concrete. Next one is surface treatment. So this is only the widely used methods for surface finishing. The concrete pavement slab is required to be plain but rough to exhibit skid resistance. So in the airfield pavements and road slabs, concrete having been brought to the plane level surface is packed lightly or broomed or textured or scratched to make the surface rough. So basically surface treatment ये हो गया कि concrete basically roads में use होता है. A domestic floor slab is required to be smooth, wear resting or crack free.
The technique of finishing the concrete force requires very careful consideration. So basically, the proportioning of mix must be appropriate without excess of deficient of matrix. Water cement ratio should be such that it provides the just required consistency of acetate spreading and good leveling, yet to give not no bleeding. So basically surface treatment ये भी हो गया कि आपका जो भी आपका अगर आप डोमेस्टिक फ्लोर स्लैब की बात कर रहे हैं देन जो आपका मिक्स हो प्रॉपर हो, इसके अलावा वाटर सीमेंट रेशियो भी एडिक्वेट क्वांटिटी में हो, और इसके अलावा जो कि आपका ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग फिनोमेना वो परफॉर्म ना होने पाए कंक्रीट में, फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट फिनिशिंग इन द concrete in a domestic floor slab. Surface must be finished at the same rate as the placing of concrete. Particular care must be taken to extend in time of traveling. Used to बेसिकली होता ये है कि कंक्रीट कहीं भी पावर करी जा रही है और उस पर ट्रैवलिंग करी जा रही है, उसको बार बार चोट पहुंचाई जा रही है फ्रेश कंक्रीट को। जितना भी स्लरी होता है वो टॉप लेयर में आ जाता है, स्लरी या फिर जो भी लूज मटेरियल है एकदम जो और फाइन है वो सारा धीरे धीरे उसकी टॉप मोस्ट लेयर में आ जाता है। उससे अगर आप प्रॉपरली बार बार ट्रैवल से ट्रैवलिंग उसकी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही नॉर्मली स्मूथ सरफेस ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा। So basically here is the figure of export aggregate finish. ये दो aggregate finish है आपके, ये थोड़ा सा बड़े पार्टिकल है और ये स्मॉल पार्टिकल है। So here are the some precautions for performing during the providing of the finishing work. The mortar composition is the same as that of concrete. It should be applied as thin as layer as possible before the base concrete is hardened and रब्ड स्मूथ। सो बेसिकली जो भी कंक्रीटिंग के ऊपर अगर आपकी लेयर एक है मोर्टार की, आपको एक लेयर लगानी है जो कि आपको प्रॉपर स्मूथ सरफेस कंक्रीट का दे सके, उसके लिए आपको एक थिन लेयर ऑफ मोर्टार बिछानी है। उसके अलावा इसमें smoothly उसको रब करना है। Sprinkling of dry cement in good quantity is not a good practice. However, a small quantity may be permitted to reduce the bad effect of bleeding. Take care to see that it does not make the top layer too rich. So basically उसके ऊपर आप एक बहुत ही small quantity में थोड़ा सा सीमेंट का पाउडर बेसिकली उस पर आप डाल सकते हैं to the prevention for the bleeding phenomena. Next one is exposed aggregate finish, applied finish work done at CME. So basically this is the concrete after the removal of the formwork. So basically this is one of the method of giving good look of the concrete surface. This beauty can be further enhanced by the use of colored pebbles or quartz. 1 or 2 days after casting, the matrix is removed by washing the surface with water or by slight brushing or washing. So basically ये जो फिनिशिंग आएगी कंक्रीट की ये लुक वाइज ठीक होती है और इसको एक्सपोज्ड एग्रीगेट फिनिश बोलते हैं। बेसिकली 2 से 3 दिन कास्टिंग के अंदर ही ये करी जाती है। बेसिकली sometimes use of hydrochloric acid solution made up to the part of acid to 6 part of water is used for washing the concrete surface to expose the aggregate. So basically करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन को एक पार्ट आपने HCl एसिड लिया, 6 पार्ट पानी लिया, वो मिला के अगर कंक्रीट पे आप उसका स्प्रेइंग कर रहे हैं तो आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो दिखने लगेगा और एक हिसाब से आपकी जो कंक्रीट का सरफेस है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाएगा with respect to the coarse aggregate. Next one is bush hammering. A bush hammer is a tool with a series of pyramidal teeth on its face. They may be hand operated and pneumatically or electrically operated. Hand tools are suitable for small jobs, but powered operated equipment is used for the large surface. Push hammer gives rapid blows on the concrete surface and it not only removes the outer cement from but also breaks some of the exposed aggregate, giving a bright, colorful and attractive surface. So basically bush hammering आपकी हो गई कि वो pyramidal वो उसमें spikes होते हैं, उससे अगर आप हैंड ऑपरेटेड है तो आप बार बार उससे हैंडमेड या बार बार पंच करके उस कंक्रीट की एक लेयर को आप या कंक्रीट जो सीमेंट की लेयर होगी आउटर मोस्ट वो थोड़ी सी
टूट के बाहर आ जाएगी। इसके अलावा जैसे आपका कोर्स एग्रीगेट होगा वो एक ऐसा टेक्सचर देगा जो कि कंक्रीट फिनिशिंग में या दिखने में जो सही लग रहा है। Next one is applied finish. So basically, the term applied finish is used to denote the application of rendering of the exteriors of concrete structure. The concrete surface is cleaned and roughened and kept wet sufficiently long time. Over this mortar, a proportion of 1:3 is applied. This mortar rendering can give an required pleasant finish, such as cement stripping, either fine or coarse, combed finish, keying, rendering, etc. So basically, plastering को ले सकते हैं इसमें. Next one is also sand facing यहाँ पे दिया गया. Sometimes it's this rendering applied on the wall in pressed with sponge. The sponge absorbs cement and water exposes sand particles. This sponge is washed and again rubbed against in the surface. With the repetition of this process, the surface gets the finish known as sand finish. A wet plastic mix of 3 parts of cement, 1 part of lime, 6 parts of sand, and 4 parts of about 5 mm size pea gravel aggregate is thrown against the wall surface by means to a scoop or plastered trowel. This finish is known as a rough cast finish. So basically, ये सारे जितने भी like lime, sand, 5 mm साइज पी ग्रेवल, अगर इसको मिक्स करके ट्रॉवल से अगर हिट किया जा रहा है, बार बार स्प्रे किया जा रहा है उस पर वॉल पे, तो वो भी आपका एक रफ कास्ट फिनिश यहाँ पे देगा. इसी तरह से हम पेबल डैश कर सकते हैं. एंड मिसलेनियस फिनिश, नॉन स्लिप फिनिश, इसके लिए आप कई सारे केमिकल्स का यूज करेंगे जिससे कि वो स्लिपरी नहीं होगा आपका सरफेस रूफ में. कलर फिनिश के लिए आप कई सारे कलरिंग कंक्रीट मटेरियल्स का डालेंगे, जैसे पिगमेंट्स ऑफ एडमिक्सचर, पेंट्स, वाइट सीमेंट, कलर्ड कंक्रीट, केमिकल स्टेन. सो बेसिकली दीज आर द एडमिक्सचर फॉर वो मिसलेनियस में आ जाएगा ये, जो कि आपको डिजायरेबल कंक्रीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है. Pigments admixtures may be added integrally to the topping mix, blended with the dry cement, or pigments may be dusted on the topping immediate on the application of screed. All the method mixing integrally with the mortar with the best method next to using colored cements. Recently in India, RMC or the Ready Mix Concrete Supplying Company have started supplying RMC concrete in various colors. They incorporate certain percentage of fibers in the concrete to take care of the shrinkage cracks and to impart other desirable properties of the concrete. So basically now these days in India, many RMC plants provide the colorful or the desirable colored concrete by mixing the some of the fibers to prevent the shrinkage and the bleeding phenomena of that concrete. Next one is water resistant floor finish. A wear resisting quality of concrete floor surface can be improved by using solutions of certain chemicals known as liquid hardness. They include fluco fluosilicates of magnesium and zinc, sodium silicate, gums, and waxes. When the compounds penetrate the pores of the topping, they form crystalline and gunny deposits and thus tend to make the floor less pervious and reduce dusting, either by acting as plastic binders or making the surface harden. सो बेसिकली वियर रेजिस्टिंग फ्लोर फिनिशिंग में ये आ जाएगा कि कई सारे केमिकल्स हैं जो कि यूज करे जाएंगे, जो कि एक्सटर्नल लेयर पे जो भी कंक्रीट के पोर्स होते हैं उनको फिल कर देंगे और प्रॉपर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देंगे. Sometimes iron filling and iron chips are mixed with the topping and the floor is made in the normal manner. The rusting of the iron filling and chips increases the volume and thereby makes the concrete dense, giving the floor better wear resistance. This is they are known as ironite floor toppings. So basically करते हैं कि फ्लोर जो होगा कंक्रीट का उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या वियर रेजिस्टेंट बनाने के लिए समटाइम्स आयरन चिप्स का यूज किया जाता है ऊपर की लेयर में, मतलब मोर्टार के मिक्स करके. तो ये करता है कि जब भी उसमें ऑक्सीडाइजेशन होगा या फिर रस्टिंग फिनोमेना आएगा तो वो डेंस हो जाएगा और कंक्रीट की जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो wear resistant हो जाएगी. So basically this process is also known as ironite floor toppings.
Fiber reinforced concrete also has demonstrated a better wear resistance quality in the case of road and airfield slabs. बेसिकली फाइबर reinforced concrete का यूज होता है जहाँ पे एयरलाइंस या फिर एयरफील्ड या फिर नॉर्मल रोड के कंस्ट्रक्शन में. Requirement of a good finish. A good concrete floor should have a surface which is a durable, non-absorptive, suitable texture, free from cracks, grazing, and other defects. In other words, the floor should satisfactorily withstand wear from traffic. It should be sufficiently impervious to passage of water, oils, and other liquids. It should possess texture in keeping with the required appearance, should be easy to clean and be safe against slipping. It should structurally be sound and must act as a unison in the subfloor. So basically good finishing of concrete is all ये बता रही है यहाँ पे कि कई जैसे कि ड्यूरेबल होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए किसी मटेरियल का उसमें टेक्सचर उसका एक परफेक्ट होना चाहिए, क्रैक फ्री होना चाहिए, क्रेजिंग और अदर डिफेक्ट्स जो आएंगे ये सारे कंक्रीट में नहीं आना चाहिए फॉर गिविंग अ परफेक्ट फिनिश इन अ कंक्रीट. Also, if we are talking about the road and airfields, then it should be satisfactory withstand wear from the traffic, and also it should be sufficiently impervious to passage of water, oil and other liquids. It means कि जो भी concrete की finishing है वो ऐसी हो कि उस पे पानी या किसी भी तरह का कोई liquid stay मत करे, flow कर जाए उस पे और properly उस concrete को basically affect ना करे. It should possess a texture of keeping in the required appearance, should be easy to clean and to be safe against slipping. Slippery नहीं होना चाहिए, ऐसा finishing आपको देनी है concrete में, also आसानी से वो साफ हो सके. It should also be structurally be sound and must act in the unison and subfloor. Next one is grinding and polishing. This topic is also very important role in the finishing phenomena. Floors, when properly constructed using materials of good quality, are dustless, dense, easily cleaned, and attractive in appearance. When grinding is uh, specified, it should be started after the surface has hardened sufficiently to prevent dislodgement of aggregate particles and should be continued until the coarse aggregate are exposed. So basically grinding ये हो गई आपकी जो भी ग्राइंड कर देना या फिर उसका जो सरफेस है वो स्मूथ कर देना विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर. और पॉलिशिंग में आपका ये हो गया कि उसकी एक टेक्सचर प्रॉपर मतलब लुक अट्रैक्टिव हो जाए कंक्रीट लेयर का या कंक्रीट के फ्लोर का, जैसे कि हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं, तो उससे उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा. ऑल्सो मान लीजिए आप फ्लोरिंग किसी चीज की करा रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्राइंडिंग कराना है टू फाइंड द to reach the perfect level of that particular concrete slab. Next one is craziness. While we are discussing about the surface finish, it will be pertinent to discuss the craziness, the development of fine shallow hair cracks on the concrete surface. So basically in this figure we can easily say that these are the fine cracks, hair cracks, which are also known as the craziness phenomena. सो बेसिकली जो नॉर्मल घरों के फ्लोर पे जिस पे आप नॉर्मल कंक्रीट लेयर के बाद एक मोर्टार की लेयर देन सीमेंट की लेयर एक होती है, उस पे कई माइन्यूट से हेयर लाइन टाइप के क्रैक्स आ जाते हैं जिसको आप क्रेजीनेस कहते हैं. The surface appearance of the concrete is often spoiled by the fairly close-in pattern of hair cracks which may appear within the first year. Occasionally, after the longer period, the cracks do not penetrate deep into the concrete and do not indicate any structural weakness. So basically, these cracks only in the top layer of the concrete and do not penetrate deep into the concrete and do not indicate the structural failure or the structural weakness. They are most obvious immediately after the surface of the concrete has dried. When wetted, they become prominent. It is not possible to state any precautions which will definitely prevent craziness, but its occurrence can be minimized. So basically कोई proper आपका तरीका नहीं जो कि इस craziness को दूर की जाए, बस ये है कि आप इसको minimize कर सकते हैं.
Craziness is due to drying shrinkage or carbonization or due to differential shrinkage between the surface of the concrete and the main body of the concrete. The differential shrinkage is the differential shrinkage in accumulated if the skin is richer than the parent concrete. It is known as that drying shrinkage is greatest when the concrete dries up faster after casting. So basically shrinkage phenomena पे भी डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें कि अगर आपकी टॉप मोस्ट लेयर या फिर कंक्रीट अगर आपकी जल्दी ही ड्राई हो गई है तब ये सारी चीज़ें या फिर ये फिनोमेना आपका परफॉर्म होगा concrete. The first precaution to take, therefore, is very careful curing so that the initial drying period is extended over as long as time as possible so that the shrinkage of outer skin is kept in conformity with the shrinkage of the main body of the concrete. So basically ये करना है कि curing proper करनी है ताकि ये जो cracks हैं perform नहीं होंगे just because the drying period is extended over as long a time as possible so that the shrinkage of the outer skin is kept in conformity. Steep moisture gradients between the surface and the interior of the concrete must be avoided if possible. Cracking will not occur if the concrete is sufficiently strong to resist the tensile forces caused by differential shrinkage, but it doesn't appear possible to prevent creasing by making a very strong concrete. So basically जब भी होगा कि जो कंक्रीट का टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है उस पे इंटरनल वो अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इस क्रैकिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा मतलब इस टाइप की जो हेयर लाइन टाइप की या हेयर टाइप की जो क्रैकिंग है इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा प्रॉपर क्योरिंग, क्योंकि क्योरिंग अगर कंक्रीट की प्रॉपर है तो इंटरनल जो कंक्रीट है उससे बाहर की ओर धीरे धीरे कंक्रीट ड्राई होना शुरू होगी। सबसे पहले ड्राई होगा आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जैसी ड्राई होगी अंदर जो कंक्रीट में वेटनेस है वो धीरे धीरे टॉप मोस्ट लेयर की तरफ या बाहर की तरफ आएगी जो कि उसको धीरे धीरे हाइड्रेशन प्रोसेस को इफेक्ट करेगी और क्रेजीनेस फिनोमेना जो है वो उसके चांसेस कम से कम होंगे या इस तरीके से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। The object must therefore be to minimize shrinkage of the surface skin, and this is best achieved by adequate curing and by taking measures to prevent shrinkage by avoiding too rich surface. The following precautions will help greatly. Traveling with the surface as little as possible, avoiding the use of rich facing mixes, say not richer than 1:3, use of low water cement ratio as possible as consistent adequation compaction, मतलब प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो और लो वाटर सीमेंट रेशियो का यूज हो, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है और रिच फेसिंग मिक्सर्स का यूज नहीं करना। मिनिमम जो ग्रेड है दैट इज 1:3। अवॉइडिंग ग्राउटिंग प्रोसेस और रबिंग द सरफेस विद नीट सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट जो होगा वो टॉप मोस्ट लेयर पे नहीं लगाना रहता है या उससे बचना रहता है टू प्रिवेंट द क्रेजीनेस। ओवर वाइब्रेशन विच रिजल्ट्स द ब्रिंगिंग टू मच स्लरी ऑन द टॉप ऑफ द साइड। सो बेसिकली वाइब्रेशन प्रोसेस या टैंपिंग के थ्रू ये होगा। अगर छोटा आपका फॉर्म वर्क है तो उसमें आप टैंपिंग कर दीजिए या फिर अगर बड़ी सी एरिया की स्लैब है या फ्लोरिंग है उसमें आप वाइब्रेशन करते हैं और वाइब्रेशन फिनोमेना ये है कि उससे स्लरी जितना है वो टॉप मोस्ट लेयर में आ जाएगा और जितना स्लरी ऊपर आएगा उतना ही ज़्यादा वो क्रेजीनेस को बढ़ावा देगा। क्रेजीनेस may also be due to the carbonation and thermal effects. Next one is whisper concrete finish. One of the disadvantage of concrete road is that they produce lot of noise when the vehicle travel at high speed due to this friction between tire and hard road surface. So basically it may be recalled that texturing or brooming is done as the surface finish or the new road pavement construction to provide skid resistance. Over the time, the texturing gets worn out and the surface becomes smooth. When it rains, the pool of the water on the smooth concrete surface causes a phenomena called hydroplaning, which when vehicle moves at high speed, which results in loss of control and skidding. Concrete roads needs roughening and resulting after some of years of use. So this is done by regrooving. Regrooving is nothing but cutting the creates grooves about 2 mm deep across the vehicular movement. This is costly and laborious practice instead. So basically ये करना है कि जो भी है जब कंक्रीट के विस्पर कंक्रीट फिनिश
ये इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब भी कंक्रीट की जो रोड है उस पर अगर कोई व्हीकल हाई स्पीड पे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से वो कोई ना कुछ साउंड जनरेट करेगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, 2 mm की एक ग्रूव उस पूरी रोड पे टू 2 mm डीप ग्रूव्स उसमें काट दिए जाते हैं एंगुलर मूवमेंट की डायरेक्शन में। तो वो आपका ये जो साउंड वाला इफेक्ट है इसको अवॉइड कर देता है। ऑन द स्मूथेंड रोड सरफेस दे ओवरलेड 40 to 50 mm of concrete having a maximum size of 6 to 10 mm coarse aggregate. The surface of new concrete will still cream, and then the top unset cement mortar to a depth of 1.5 to 2 mm is removed, exposing the aggregate, making the surface rough enough for safe high-speed vehicular movement. So basically इससे दो फायदे हैं। फर्स्ट वन इज जो भी आपकी साउंड जनरेट हो रहा है टायर से व्हीकल के या रोड के बीच से, इसके अलावा जो परफेक्ट फ्रिक्शन या फिर जो स्किड स्किड नहीं होगी वहां पे व्हीकल आपकी, और रफ सरफेस हमें वहां पे मिल जाएगा। Mostly in many continental countries where concrete pavements are popular, they provide 40 to 50 mm layer of whisper concrete. They found that there is very little difference in the cost between regrooving and providing whisper concrete. It is also seen that providing a white topping is that providing concrete pavement over bituminous pavement, adoption of whisper concrete could give good economy. So basically whisper concrete का phenomenon ये है कि अगर आप बाद में groove काट रहे हैं उसके अलावा आप डायरेक्ट विस्पर कंक्रीट 40 to 50 mm का यूज करेंगे तो भी सेम ही चीज आएगी और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, ज्यादा कॉस्ट में फर्क नहीं आएगा। तो डायरेक्टली ये मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। सो फॉर दिस लेक्चर that is enough. In this lecture we studied about the finishing of the concrete surface in detail. So thank you.